I had made my submissions mostly. There were certain things that I had to finish. And Lordships had indicated that your Lordships wish to look at the matter and then hear it again. इसके अंदर पिछली तारीख से लेके आज तारीख तक एक चीज डेवलपमेंट है, which is my duty to point out. Your Honor will recall, मेरी अरेस्ट हुई थी. जब मुझे पेश किया गया स्पेशल जज साहब के सामने तो मुझे जेसी की रिक्वेस्ट की, कोई ईडी कस्टडी ना मांगी. बिकॉज वन ऑफ माय पॉइंट सर वाज कि आपने प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज किया, आपने ईडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और उसके बावजूद कभी भी मुझसे ना इन्फॉर्मेशन मांगी गई ना मेरा स्टेटमेंट मांगा गया. जब मेरी अरेस्ट भी करी गई उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट नहीं लिया और आपने मुझे जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया. तो पहले दिन आपने जुडिशियल कस्टडी की मांग करी, वो आपको मिली. तब से लेके जब तक मेरी बेल एप्लीकेशन इस कोर्ट के सामने उसकी बहस नहीं हुई, तब तक आपको ये याद नहीं आया कि आपने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए था. जब हमने ये बात यहां पर कोर्ट में कही, and your lordships asked the question of have you recorded the statement, my learned friend very fairly said yes, we have not recorded a statement. Then an application comes to be moved, say that we want custody. The learned special court gave them permission that whatever you wish to ask, go to the judicial and ask your questions, record whatever statement. So now a statement has also been recorded. It has been done now 4 days ago, 27th and 28th of October. 28th of October, I had addressed this court on 23rd. Application was filed on 26th. While declining ED remand, permission was granted to them to record my statement in judicial custody. And that was done on 27th and 28th. But what is most peculiar now is, and sir, this is what I will do is I will summarize my 10 points, which I am troubling this court with. What Your Honor will recall, this is about import of poppy seeds, where import has been done under a license from a correct country for the correct quality and the correct quantity by the correct person, following customs laws and following the regulations of the narcotic commissioner. So there is no problem on the actual import or the actual commodity which has been taken. The case here was, if the Lordship remembers, the allegation is one of benami. कि आप कर रहे हो यूनिक के नाम से, वो कर रहे हो ठीक है, आपने 8 और लोगों को साथ में मिलाया, उनके नाम से 8 अलग कस्टम्स आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उन्होंने लिए और आपने उनकी मदद करी, जो ये दिखाता है कि एक्चुअली आप. So the 10 points are, the first point that I had made was, ये सारी चीज ईडी को फेमा की इन्वेस्टिगेशन, फॉरेन एक्सचेंज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर इनकी धारणा बनी. तो पहला पॉइंट था कि ईडी इज नॉट द एजेंसी डिसाइड ऑन बेनामी. इट इज ए फुल एक्ट pertaining to benami. That act has a separate department under the Income Tax Act to decide कि कौन सी चीज बेनामी है और कौन सी नहीं है. ईडी वो एजेंसी नहीं है. दैट इज पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, ईडी साहब को जब पता लगा या ऐसी धारणा उनकी हुई कि हाँ ये बेनामी हो सकता है, तो उन्होंने उस एजेंसी को चिट्ठी तक नहीं लिखी कि जी आप इसके अंदर तहकीकात कर लें, आप तफ्तीश कर लें, डिसाइड कर लें कि ये बेनामी है या नहीं है. तीसरी बात कि हमने स्ट्रेट अवे पुलिस में इंफॉर्मेशन भेज दी कि आप इस चीज के ऊपर एफआईआर दर्ज करें. वो पावर ईडी के पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नहीं है. I had shown section 66 of PMLA, section of Money Laundering Act, उसके अंदर पावर है, बट वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे उस दिन. And so lack of power was the third. The fourth point, sir,
मैं सब कुछ मान लिया, 9 लोग बेनामी हैं और 9 लोग ने सारी कस्टम्स ड्यूटी देने के बाद, सारी परमिशन के देने के बाद प्रॉपर तरीके से एक कमोडिटी को इंपोर्ट किया। तो इसमें 417, 420 चीटिंग कहां से आई, किसको लॉस हुआ? आपका एफआईआर कहता है गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस तो उतनी है तो होती, चाहे मैं इंपोर्ट करूं चाहे कोई और इंपोर्ट करे। गवर्नमेंट अलाउ करती है एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी का आना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और इंपोर्ट करता तो ज्यादा ला सकता था। सो 420 और 417 के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे, कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं, कोई इंड्यूसमेंट नहीं, एंड दैट इज व्हाई फॉर आफ्टर डिस्पाइट मोर देन अ ईयर, जो एजेंसी, जो पुलिस ऑफिसर उस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आज तक उन्होंने कभी मुझे ना बुलाया, चार्जशीट फाइल नहीं करी, कुछ नहीं हुआ, उस चीज को 1.5 साल हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जब 420 एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को देख, दैट मीन्स आपने इस गलत काम करने से जो आपको इकोनॉमिक एडवांटेज, जो आपको फाइनेंशियल लाभ मिला, उसको पकड़ना ईडी का काम। जब 420 खुद ही फाउंडेशन उसका हिल रहा है भी या नहीं, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का होने का तो सवाल ही नहीं। एंड दैट इज व्हाई all of these points, sir, which I am making, go to the first larger point, which is section 45 PMLA, जो requirement है, that it shows that I am not guilty of this offense. It is a higher threshold has been met and I should be granted bail. This is the first large submission. इसके अंदर ये 6 sub points थे. The second large submission which I made, sir, was कि आपने अरेस्ट करते हुए आपका एक थ्रेशोल्ड है सेक्शन 19 में. सेक्शन 45 इज द फर्स्ट बकेट, सेक्शन 19 इज द सेकंड बकेट. कि अरेस्ट करते समय ईडी साहब के पास अपने मटेरियल पे एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए. क्या होना चाहिए? आई एम गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस. It is not an arrest under CRPC which can be made on suspicion, not on credible information, not on my finding out for an investigative purpose कि आपने ये किया या नहीं किया. ED की power to arrest under 19 is after ED comes to a conclusion, हाँ ये offense हुआ, हाँ इस आदमी ने किया, हाँ मेरे पास वो सारा मटेरियल है ये दिखाने के लिए कि गिल्टी है. और अगर गिल्टी है, the question that I had posed for myself, and I will invite this court to answer it in the context of this order and judgment, is can anybody come to the conclusion of somebody else's guilt without even speaking to them? कि मैंने अपने घर में फाइल के अंदर आपकी गिल्ट के बारे में सामान इकट्ठा किया, आपसे सवाल नहीं किया, आपसे जवाब नहीं पूछा, आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, आपसे डॉक्यूमेंट नहीं लिया और आपको गिल्टी तरकार कर दी. दैट इज द फैलेसी अंडर सेक्शन 19. और अगर सेक्शन 19 का उल्लंघन है तो रिलीज द सेक्विटर. आई हैड शोन जजमेंट्स ऑन दैट. सो दिस इज द सेकंड बकेट. एंड द थर्ड बकेट, व्हिच इज द लास्ट बकेट व्हिच आई हैड नोटेड, is on the issue of necessity to arrest. क्या जरूरत थी? अब आप इस इन्वेस्टिगेशन को 11 महीने से आप कर रहे हैं, 1.5 साल से प्रेडिकेट एजेंसी कर रही है. किसी एजेंसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी कि वो मुझसे आके सवाल जवाब करे. आपने फेमा के अंदर मेरे अगेंस्ट एलओसी खोली ताकि मैं इंडिया छोड़ के ना जाऊं. मैंने उस एलओसी को चैलेंज किया. उस एलओसी के चैलेंज के अंदर आपने अपनी एलओसी को वापस लिया. 11 महीने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना सोचे, मुझसे मेरे बारे में बिना जानकारी लिए आपने मुझे अरेस्ट कर दिया.
नेसेसिटी क्या थी, और अगर नेसेसिटी नहीं थी तो फ्रॉम द लॉ ऑफ जोगिंदर कुमार ऑनवर्ड्स व्हिच अप्लाइज टू normal CRPC cases, the arrest had to be wrong, and that this is where I had shown, sir, Arvind Kejriwal's judgment. सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस दिया गया 3 जजेस को अभी, and while that reference is pending, interim bail has been granted till the time that reference is decided. So my third submission in the alternative is 45 का थ्रेशोल्ड सर मैं क्रॉस करता हूं, इसलिए मुझे बेल मिलनी चाहिए. नंबर 2, सेक्शन 19 में इनकी अरेस्ट करने के अंदर इन्होंने मैंडेटरी प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे बेल मिलनी चाहिए. और नंबर 3, मेरी अरेस्ट की एट दिस पॉइंट इन टाइम कोई नेसेसिटी नहीं थी, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, एंड सो योर ऑनर शुड necessity is over and above 90. Necessity, Arvind Kejriwal judgment, let me show that straight away again, says कि नेसेसिटी के बारे में किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में नहीं है, लेकिन क्या हमें नेसेसिटी एडिशनली देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए. अरविंद केजरीवाल के साथ जजमेंट है, वो कंपाइलेशन आपके पास थी. उस कंपाइलेशन में पेज 163 पर that judgment begins, sir. And straight away, let me take your honor to the relevant issue. बिल्कुल इस जजमेंट के एंड में आफ्टर no, all of that I read. I am going straight away to the issue of necessity. Please come, sir. Page 204, paragraph 84. तो सेक्शन 45 का ग्राउंड अलग, सेक्शन 19 का ग्राउंड अलग. तीसरा इंडिपेंडेंट ग्राउंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, एंड दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद एट पैरा 84 and 85. In view of the aforesaid discussion, and as Vijay Madan Lal Chaudhary supra is a decision rendered by 3-judge bench, we deem it appropriate to refer the following questions of law for consideration by a larger bench. A, whether the need and necessity to arrest is a separate ground to challenge the order of arrest passed in terms of section 19(1) of the Act, whether the need and necessity to arrest refers to the satisfaction of formal parameters to arrest and take a person into custody, or it relates to other personal grounds and reasons regarding necessity to arrest a person in the facts. तो क्या आपका सिर्फ एक लिप सर्विस फॉर्मली मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे जरूरत थी, या वो सफिशिएंट है, या in the context of that person whether really there is a necessity is to be seen. That is point number B. And point number C, if questions A and B are answered in the affirmative, what are the parameters and facts that are to be taken into consideration by the court while examining the question of need and necessity of arrest? As we are referring the matter to a larger bench, we have to, please see the words, we have to, despite our findings on reason to believe, consider whether interim bail should be granted to Arvind Kejriwal. Given the fact that the right to life and liberty is sacrosanct, and Arvind Kejriwal has suffered incarceration of over 90 days, the questions referred to above require in-depth consideration by a larger bench. We direct that he should be released on interim bail in connection. Please. My submission, sir, is this. This is a case where it was 90 days custody. That custody is not significant from the point of view of PMLA. बाकी cases हुए सर जिसके अंदर 6 महीने हुए, 2 साल हुए, 1.5 साल हुआ. Those are cases where period of custody has weighed with the court purely to grant bail. And I had started by saying I am not one of those cases, which is why
I am saying, please test me on the level of 45. Please test them on their allegations of Section 19. Additionally, there is an issue of necessity. And that is why these are the three things that I am beseeching this court to consider. कि जब पूरे केस के अंदर आपके पास allegation wise material is questionable or does not exist, and where you exercise that power prematurely, take a man into custody before that material came in, violated Section 19. According to me, Mullah, this is a case where I should be released on bail. I am putting this third point as an additional factor, not as the primary point. Not as the, so I am not seeking interim bail. I am seeking bail. Because according to me, I have reached the threshold of 45. पर इससे मैं ज्यादा क्या बोलूं कि अगर आप इनके काउंटर एफिडेविट को एक बारी देखें, and it is so peculiar that a responsible agency, पर मैं पढ़ूंगा इसको, लेकिन एजेंसी कहती है आप फ्लाइट रिस्क है. क्यों? क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं. आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आप फ्लाइट रिस्क है. सर, कार्गो अंदर आता है, इंपोर्ट होता है. मैं अपने काम के लिए बाहर जाता हूं. There can be always conditions imposed in these scenarios to titrate. Every day we deal with situations where people have to travel for purpose of work or otherwise. Please see page number 26. इनकी दो objections है. Para H. The accused arrestee fails the triple test of bail for the following reasons: tampering with evidence and influencing witnesses. It is submitted that the arrestee accused person is the kingpin and mastermind of the whole scheme narrated above, where large number of Benami entities were formed with dummy proprietors who were his associates and employees. If he is let out on bail, there is high likelihood that accused arrestee will influence the witnesses in this case. Flight risk. It is submitted that the accused is a person of means and works in the business of import and export. Such circumstances are a flight risk if let out on bail. My submission was this: both of these issues are irrelevant as far as the others are concerned. Their statements have already been recorded. And what your honor will recall is all of those persons are co-accused. So there is no independent witnesses that they have which are capable of being influenced. And second is the work that somebody does. If only because a person is in import-export business does not make him a flight risk. But my submission is that on these aspects, I should be released on bail. Whatever conditions your lordship feels that I should comply with, I am ready and willing to do so. If your lordship has any questions, whether on facts or on law, I am here to assist the court in finding the truth, both legally and factually. Yes, my lord. As per the public notice, only one importer can obtain one license. So, by doing this, he has contravened the provisions of the public notice, the guidelines of district. So, in that way, it is a violation of the license. Only one person can do the business as per condition of license. One person can obtain one license for import. Violation. As per allegation, He has runs around 13. 19 additional import license he obtained by circumventing the guidelines of the Ministry of Finance. That is the contravention. सर, ये कह रहे हैं आज इन्होंने prosecution complaint file नहीं करी है इसलिए कोई co-accused नहीं है. Otherwise, every person in that is automatically co-accused. I'll answer that. Let my learned friend finish. सर, मैं इन्वेस्टिगेशन तो रोक ही नहीं सकता हूं ना. रोका, इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई मेरी अरेस्ट से पहले. That is the biggest fallacy which they are not answering. Please, and let the learned prosecutor indicate कि
गिल्ट इन्होंने सेक्शन 19 के अंदर आ गए, उससे पहले मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया या नहीं किया? आप 27 और 28 अक्टूबर 2024 का स्टेटमेंट दिखा रहे हैं साहब को। मेरी अरेस्ट 3 अक्टूबर को हो गई। आपने अपना गिल्ट का मतलब बना लिया। Can they come to a conclusion about my guilt without recording my statement? I will show कि co-accused के भी एडमिसिबल नहीं है, ये जो दिखा रहे हैं आज ये भी एडमिसिबल नहीं है, कि ये मेरी कस्टडी के बाद के स्टेटमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है can't even read them. Tara business import license obtain करना, everything was done by Asif Hanif Tara. Sir, no statement है section 50 that is submitted with as good as judicial proceeding at par with yes everything. that is one material, and bank account statement which shows the money trail, how the money flows from unique trader to these entities, and then payment was run to the foreign supplier. इसमें शो कर रहे हैं कि इन्होंने लिखा है, Sir, रिकॉर्ड किया है। I'm most obliged. मेरा सवाल सर बड़ा लिमिटेड है। Any agency which has to come to a conclusion of my guilt, not a guilt of 9 persons. Any agency which has to come to a conclusion regarding my guilt and they cause themselves judicial proceedings, can they come to that conclusion without speaking to me? तो आईओ साहब कहते हैं बिल्कुल सही सर। 19 के अंदर इनको ये कंक्लूजन करना है कि मैं गिल्टी हूं, आसिफ हनीफ थारा गिल्टी है, उसके लिए इन्होंने 9 लोगों के स्टेटमेंट आप I will demonstrate that and I will also demonstrate the fact कि वो एडमिसिबल नहीं है, बट आप उसको 1 मिनट साइड रख लें। इन्होंने 9 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए। पलड़े में जो लेडी जस्टिस थी उसके लेफ्ट पलड़े में 9 लोग के स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इन्होंने लेफ्ट साइड पे रखा। गिल्ट का मेरी इन्वॉल्वमेंट इनको दिखाई दी, मेरी पॉसिबिलिटी सस्पिशन मेरे अगेंस्ट इनको दिखाई दिया। एक आदमी का कहना कि मैं गिल्टी हूं, यहां तक पहुंचने के लिए पलड़े का राइट साइड तो खाली रखा। क्यों खाली रखा साहब? आपने इतनी भी जहमत नहीं करी कि आप मुझ तक आके मुझसे पूछे, मुझे बुला ले, वो चीज आप। एंड अगर वो नहीं किया साहब, अगर वो नहीं किया तो आपने सेक्शन 19 का उल्लंघन किया, बिकॉज यू कुड नॉट हैव कम। आई एम मोस्ट ऑब्लाइज्ड। This is where please sir, section 19 में, and that is where the question had arisen, what is the material on which section 19 has to be seen. Sir, मैं इसमें 2 चीजें आपको दिखाऊंगा। नहीं, but material has to be admissible material. That is what I had read. Please first see. Let me start by showing प्रेम प्रकाश। आपकी compilation पे page 246 पे आए सर। Basis of material has to be admissible even at the stage of bail. The moment, let me put it another way. आईओ साहब आज लिख के दे सकते हैं कि वो अक्यूज, ये जो 9 लोग हैं जो एफआईआर में अक्यूज्ड है, as doing what? बेनामी है और एक बेनिफिशियल ओनर। जो आदमी बेनामी है, जिसने साइन किया, जिसने पैसे लाया, आप कह रहे हैं कि जिसने उस पैसे को मुझे दिया भी नहीं। अपना स्टेटमेंट इन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग मेरे साथ नहीं करी, पैसे जो उन्होंने कमाए वो मुझे नहीं दिए। का कहना है कि जो पॉपी सीड्स आए आपने आगे मुझे बेच दिए। सीड्स ऑफ क्राइम के अंदर नो एजेंसी। I am most obliged. Even at the point of arrest, आप let me put it this way sir, PCIR दिखा दे।
और ये बोल दे कि ECIR में उनका नाम अक्यूज नहीं। दिखाइए ECIR, साहब को दिखाइए। सर मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपके पास है। मुझे आप ECIR का फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। भाई के साथ ECIR मुझे तो नहीं दिखाई दिया। Right? You see the first page. And correct. मेरा नाम और उन 9 लोगों का नाम एक ही बार एक बक्से के अंदर वन आफ्टर द अदर लिखे। This, in my humble submission, has to be taken off very serious note. Today it suits an agency to say कि मैं वो co-accused नहीं है। एक टेबल है नीचे, लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स, उस टेबल में सबसे ऊपर नाम मेरा है और उसके आगे जो 9 नाम है वो उनके हैं जिन्होंने इनके स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड किया। और फिर आज आपसे आके कहा जा रहा है कि सर ये तो शुरुआत, ECIR is the beginning of their investigation. These persons were named suspects in that. Obviously they are not accused because they are not, there is no prosecution complaint filed. But it is absolutely dishonest to say that they are only witnesses and hence their statements become admissible. तो एक मेरे पिताजी साहब है, एक मेरे पिताजी साहब, और ये वो लोग हैं जिन एक कंपोजिट केस है जो FIR, सर, एंड आई आस्क माय सेल्फ, FIR किसके कहने पे फाइल हुई? FIR वाली एजेंसी को अपने आप तो नहीं पता लगा था कि ये बेनामी है। इन्हीं साहब ने चिट्ठी लिखी थी, ये 10 लोग अक्यूज्ड हैं। नहीं सर, ये तो थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप था ईडी ने फेमा के अंदर चिट्ठी लिखी, इसी व्यक्ति ने, यही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसके अंदर कहा कि ये लोग सस्पेक्ट हैं, उसके बेसिस के ऊपर FIR हुई। उस FIR पे जो आप देख रहे हैं ECIR, ये हुई। घूम फिर के ये लोग सस्पेक्ट फ्रॉम डे 1। So today to be told that these 9 persons are not accused, nothing short, sir, of misleading the court. It is in my humble submission. I am sorry to say. But I am equally suspect, and their allegations are suspect. Their action against me is suspect. The entire case is suspect. That means, sir, that means कि ये exonerate हो गए। एक आदमी अगर सस्पेक्ट की तरह शुरू हुआ, सस्पेक्ट के पौधे पे शुरू हुआ, if a person starts as a suspect, it is only with exoneration that he will become not an accused. वो कर दिया इन्होंने, वो मान ली मैंने बात। आपने करके जितनी औपचारिकताएं करनी थी आपने कर दी। आप मेरे साथ, मेरी जो जजमेंट कंपाइलेशन है सर, उसके अंदर 2 पैराग्राफ दिखाऊंगा आपको, प्रेम प्रकाश की जजमेंट के अंदर, कि मेरे स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है। आप कहते हैं कि जुडिशियल एक्सरसाइज है, वैल्यू है जब मैं कस्टडी में था, और जो को अक्यूज्ड है उनके स्टेटमेंट की क्या वैल्यू। सर पेज नंबर begins, sir, at 246, and please come straight away to first paragraph 19 at page 256.
सर एक हेडिंग है admissibility of the statement of the appellant, which means mine, page 256. In the oral submissions and as elaborated in the detailed written submissions filed by the ED, reliance is sought to be placed on the statement of the appellant. It is stoutly resisted on the side of the appellant by contending that the appellant was in custody from this date in some other ECIR, that his arrest was shown in 11 August. It is submitted that the statements recorded while in custody in another case will not be admissible. It will be hit by section 25. Sir, I'm pausing here. प्रेम प्रकाश वो केस था जिसमें उसकी अरेस्ट किसी और केस में हुई थी और इस केस के अंदर उसके स्टेटमेंट जुडिशियल कस्टडी में रिकॉर्ड हुए थे. मेरे केस के अंदर मेरे स्टेटमेंट इसी केस में रिकॉर्ड हुए हैं जिसके अंदर मेरी कस्टडी है. सर पैरा 8.23 वहां पे Now please come to paragraph 22. Question that arises is, when a person is in judicial custody or custody in another case investigated by the same agency, whether the statements recorded in this case on so and so for a new case in which his arrest is not yet shown, which are claimed to containing incriminating material, would be admissible under section 50. In Vijay Madan Lal Chaudhary, after addressing the scope of section 50, it has been held, however, if his or her statement is recorded after a formal arrest by the ED official, the consequences of Article 20 subclause 3 or section 25 may come into play to urge that the same being in the nature of confession shall not be proved against him. The three-judge bench in Vijay Madan Lal has, apart from 20 subclause 3, also adverted to section 25. Now, after that, sir, please come to para 25. This court in Vijay Madan Lal anticipated the myriad situations that may arise in the recording of section 50 statement and discussed the parameters for dealing with them. In Rajaram Jaiswal, judgment quoted in extenso in Vijay Madan Lal, this court observed that the expression police officer is not confined. Aap ye chhod dijiye. Please come to para 27 at page 260. In the facts of the present case, we hold that the statement of the appellant, if to be considered as incriminating against the maker, will be hit by section 25, since he has given the statement whilst in judicial custody pursuant to another proceeding instituted by the same agency. Taken as he was from judicial custody to record the statement, it will be a travesty of justice to render the statement admissible against the accused. Para 29. A complete reading of Vijay Madan Lal, particularly para so-and-so, mandate us to ask ourselves the query, is a reasonable inference legitimately possible that due to the vulnerable position in which the appellant was placed and the dominating position which the investigating agency was situated, in view of the arrest of the other proceeding, obtained a conducive atmosphere to obtain a confession? We certainly think so. The question is not whether it actually happened. The question is, could it be possible? Para 32. We have no hesitation in holding that when an accused is in custody under PMLA, irrespective of the case for which he is under custody, any statement under section 50 to the same investigating agency is inadmissible against the maker. If this is the position, आपको आज जो मटेरियल दिया है 27 और 28 अक्टूबर 2024 के मेरे दो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं सर, which is the only statements of mine. My submission is, Supreme Court says at the stage of bail, it cannot be looked at against me. It can still be looked at in my favor. So the first set of material, which is my so-called statements being used against me, cannot be looked at against me. This is not material that can be considered against me. But एक चीज हम सर भूल रहे हैं. सर 3 अक्टूबर का डिसीजन अरेस्ट करने का 27 और 28 अक्टूबर के स्टेटमेंट से जस्टिफाई तो नहीं हो पाएगा. इस चीज का जवाब क्या है, मैं अपने आप से पूछ रहा हूं. एक एजेंसी जो 11 महीने से ये
दिन रात लगा के ये काम कर रही थी, उसको टाइम नहीं मिला मुझ तक पहुंचने का कि जो उसके बड़े इंपॉर्टेंट और गूढ़ सवाल थे 27 और 28 अक्टूबर को, 27 और 28 सितंबर को उनको याद नहीं आए, क्या उनको पता नहीं था कि मुझसे सवाल जवाब करना जरूरी है ये बोलने से पहले कि मैं गिल्टी हूं? दैट सर इज द लीगल क्वेश्चन। एक आदमी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका उत्तरदायित्व ये है, वो आसिफ हनीफ थारा पिटिशनर को ये बोले कि वो गिल्टी है, इससे पहले कि वो उसके गिरेबान पे हाथ लगाए उसको अरेस्ट करने के लिए, इज इट नॉट कंपल्सरी फॉर दैट ऑफिसर टू रिकॉर्ड दैट स्टेटमेंट, टू पुट एवरीथिंग? 9 लोगों ने ये बोला है, आपके बैंक स्टेटमेंट में ये दिखता है, आपका क्या जवाब है? अच्छा, आपका जवाब ठीक नहीं है मेरी धारणा में, मैं मानता हूं आप गिल्टी है, मैं आपको अरेस्ट, ये है प्रोसीजर। आपने क्या किया? 9 लोग के स्टेटमेंट उनको अपने पास बुलाया, आज मानूंगा कि वो स्टेटमेंट आपने लिए, उन्होंने दिए, लेकिन आपका काम वहां पे खत्म तो नहीं हुआ साहब, कि आपका काम ये बताना नहीं था कि एविडेंस पॉइंट्स टू आसिफ हनीफ थारा, ये बताना था कि आसिफ हनीफ थारा गिल्टी है। और अगर आप अपने अंदर 5% भी जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, नेचुरल जस्टिस के बगैर नहीं कर पाएंगे, इस चीज के बगैर नहीं कर पाएंगे कि आपने एक आदमी को हटा दिया अपनी इन्वेस्टिगेशन से और फिर कह दिया कि वो गिल्टी है, वो अलाउ नहीं करेगा कोर्ट। दैट इज द लीगल क्वेश्चन अंडर सेक्शन 19 जिसका कोई जवाब नहीं आ रहा आपके पास। नंबर 2, जो 9 लोग हैं उनके स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है? की एविडेंशियरी वैल्यू, सेम जजमेंट। आफ्टर दिस सर पैरा 35 ऑनवर्ड, इसी जजमेंट का पेज 263, मल्टीपल अदर पर्सन वर आल्सो साइटेड बाय द ईडी। जी ये देखिए, इस आदमी ने ये बोला, इस आदमी ने वो बोला, ये सारे को अक्यूज थे एफआईआर के अंदर। और एक पैराग्राफ रेलेवेंट है सर, पैरा 37 सर, 36 फैक्ट्स है, 37 इज द लीगल प्रोपोजिशन। Being a co-accused with the appellant, his statement against the appellant, assuming there is anything incriminating against the present appellant, will not have the character of substantive evidence. The prosecution cannot start with such a statement to establish its case. Behold, in such a situation, the law laid down under Section 30 of the Evidence Act by this court, while dealing with confession of the co-accused, will continue to apply. In Kashmira Singh, it was decided that the proper way to approach a case of this kind is first to marshal the evidence against the accused, excluding the confession altogether from consideration, and see whether, if it is believed, a conviction would safely be based on it. If it is capable of belief independently of the confession, then of course it is not necessary to call the confession innate. But cases may arise where the judge is not prepared to act on the other evidence as it stands, even though if believed it would be sufficient to sustain a conviction. In such an event, the judge may call innate the confession and use it to lend assurance to the other evidence, and thus fortify himself in believing that without the aid of the confession, he would not be prepared to accept. Insofar as Afshar Ali's statement is concerned, investigating agency will have to first marshal the other evidence, and this cannot be best be looked at the statement for lending assurance. Independently, the statement of Afshar Ali does not prima facie indicate anything about the rule of law. सर मेरे केस के अंदर अब इन्होंने 3 चीजें बोली, बैंक स्टेटमेंट कनेक्टिंग वन कंपनी टू द अदर, पूरे बैंक स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं, पूरे बैंक स्टेटमेंट। वो बैंक स्टेटमेंट में कह रहे हैं सर कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पैसा गया, जो एक कंपनी है जो इसका पैसा गया वो यूनिक ट्रेडर्स है, वो मेरे पिताजी साहब की कंपनी। जो 9 लोगों को पैसा गया वो एम्प्लॉयज की कंपनी। उन 9 लोगों ने अपने सिग्नेचर्स के साथ अपने होशो हवास में इंपोर्ट किए,
सो किसी बैंक स्टेटमेंट के अंदर मुझ पे कोई चीज आ नहीं रही, दैट अलोन द लेवल ऑफ गिल्ट। आई एम सो सॉरी सर, एंड आई वाज गोइंग टू आंसर दैट। मेरी कंपाइलेशन में जिस टर्म का ये उल्लंघन बता रहे हैं, आप पेज नंबर 10 पे आ जाए सर। कई बार सर ऐसा है, हम लोग अपने केस को अच्छा करने के लिए थोड़ा ऊपरी तौर से चीज को डील कर ले। जिस क्लॉज का उल्लंघन ये कहते हैं सर, दैट इज क्लॉज नंबर 4। सर ये शुरू होती है पेज नंबर 10, गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। सर मेरी कंपाइलेशन शुरू में ही होगा, पेज नंबर 10 नोटिफिकेशन है सर। का नहीं नहीं सर, ये तो जजमेंट्स वाली कंपाइलेशन, ये सामने जो स्पाइरल बाउंस। आई एम सॉरी। नंबर 10 हेडिंग है सर, गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंपोर्ट ऑफ पॉपी सीड्स फ्रॉम चाइना। इसका नीचे की तरफ चौथा पॉइंट, रोमन 4, ईच इंपोर्टर प्लीज मार्क द वर्ड with a specific importer exporter code